Good morning, children. Chapter name Unity in Diversity. Our planet has different kinds of people. Each has specific languages and unique traditions. They follow different religions and cultures. These differences enrich our lives. India is a large country. Different parts of the country have different customs, languages, dress, and food habits. The main religions in India are Hinduism, Islam, Buddhism, Sikhism, Jainism, Christianity, and Zoroastrianism. The Indian Constitution recognizes the right for everyone to practice any religion and develop their own language and culture. We all are one despite the differences. Now, students, we are living in planet Earth and there are different kinds of people. धरती पर विभिन्न प्रकार के लोग हैं, सबकी अपनी भाषा है और अपनी परंपरा है। भारत एक बहुत बड़ा देश है, विभिन्न प्रकार के लोग यहाँ पे रहते हैं, कितनी सारी स्टेट्स हैं, तो सबके अपने ट्रेडिशन है, अपनी कस्टम्स है, भाषाएं हैं, खान पीन है। मेन रिलीजन्स जो हैं हमारे भारत में वो है हिंदुइज्म, इस्लाम, बुद्धिज़्म, सिखिज़्म, जैनिज़्म, क्रिश्चियनिटी एंड ज़ोरोएस्ट्रियनिज़्म। ज़ोरोएस्ट्रियनिज़्म होता है पारसी धर्म। नाउ एज पर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मतलब भारतीय संविधान के अनुसार भारत में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को राइट है, फ्रीडम है, कोई भी रिलीजन को प्रैक्टिस कर सकता है और अपनी भाषा और संस्कृति का विकास कर सकता है। वी ऑल आर वन डिस्पाइट द डिफरेंसेस मतलब हम सब लोगों में इतने डिफरेंसेस हैं, हमारी लैंग्वेजेस अलग हैं, हमारे रिलीजन्स अलग हैं एक दूसरे से, बट फिर भी हम सब लोग एक हैं। Next paragraph. Our culture today. Culture consists of ideas, beliefs, customs, art, religions, music, and dance. The food habits of the people, the festivals they celebrate, their art and handicrafts are all part of their culture. Now students, culture क्या होता है? कल्चर होता है संस्कृति, जिसमें विभिन्न प्रकार के विचार होते हैं, विश्वास होता है, रीति रिवाज होते हैं, धर्म होते हैं, धर्म के अनुसार त्यौहार मनाए जाते हैं, खान पीन के तरीके होते हैं, हैंडीक्राफ्ट्स होता है, हाथ से बनी हुई चीज़ें। तो ये सब जो क्या है, ये सब हिस्सा है कल्चर का, संस्कृति का। नेक्स्ट, फेस्टिवल्स. Some festivals are religious and some are linked to the seasons. National festivals such as Independence Day, Republic Day, Gandhi Jayanti are celebrated throughout the country. Festivals such as Diwali, Dussehra, Holi, Eid and Christmas are also celebrated throughout the country. Other festivals such as Baisakhi, Basant Panchami, Pongal, Onam, Guru Purab and Bihu are celebrated in some parts. We also celebrate the birthdays of gods and great men as festivals. For example, Lord Krishna's birthday is celebrated as Janmashtami. The birthday of Gautam Buddha is celebrated as Buddha Purnima. Lord Mahavir's birthday is celebrated as Mahavir Jayanti and Guru Nanak's birthday as Guru Purab. Next, dance and music. India has two major kinds of dances, classical and folk. The classical dance such as Bharatnatyam is popular in Tamil Nadu, Kathakali in Kerala, Kathak in North India, Kuchipudi in Andhra Pradesh and Telangana, Manipuri in Manipur and Odissi in Odisha. Most of these dances tell story from our epics, the Ramayana and the Mahabharata. नाउ स्टूडेंट्स, क्लासिकल डांस होता है शास्त्रीय नृत्य और फोक डांस होता है लोक नृत्य, और ये दोनों ही नृत्य हमारे भारत देश के प्रमुख नृत्य हैं। क्लासिकल डांस जैसे कि भरतनाट्यम तमिलनाडु में, कथकली केरला में, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना में, मणिपुरी मणिपुर में और ओडिसी डांस ओडिशा में। ज़्यादातर ये नृत्य मतलब अधिकतर ये जो डांसेस हैं ये क्या बतलाते हैं, ये कहानियाँ बताते हैं रामायण और महाभारत के बारे में। नेक्स्ट पैराग्राफ. Ancient Indian knowledge has been passed by one word of mouth. Stories with moral lessons were told through song, dance and drama. This is called art of folk theatre. Folk dances are mostly based on seasons. For example, Bhangra from Punjab, Garba from Gujarat,
Chau dance from Jharkhand and Orissa, Ghumar from Rajasthan, Lavani from Maharashtra, and Bihu from Assam are popular folk dances. एशियंट इंडियन नॉलेज का मतलब होता है प्राचीन भारतीय ज्ञान, जो कि वर्ड ऑफ माउथ मतलब मुख के द्वारा मौखिक रूप में पास किया जा रहा है, एक से दूसरे तरफ पहुंचाया जा रहा है। बहुत सारी ऐसी कहानियाँ हैं जिनके जो मॉरल लेसन्स हैं उन वो किसके द्वारा बतलाए गए हैं? सॉन्ग्स, डांस और ड्रामा के द्वारा। दिस इज कॉल्ड द आर्ट ऑफ फोक थिएटर। फोक थिएटर क्या होता है? लोक रंगमंच। और आर्ट क्या होता है? कला। तो इसको बोला जाता है लोक रंगमंच की कला। इसमें आगे बताया गया है कि फोक डांसेस मतलब लोक नृत्य किस पे आधारित होते हैं? ज़्यादातर सीजन्स के ऊपर। सीजन्स क्या हैं? ऋतुएं। लोकप्रिय लोक नृत्य जैसे कि भांगड़ा पंजाब से, गरबा गुजरात से, छाऊ डांस झारखंड और उड़ीसा से, घूमर राजस्थान से, लवानी महाराष्ट्र से और बिहू असम से। Next paragraph. Indian music, like the dance forms, also goes back to the Vedas. There are two main schools of classical music. The North Indian school is called Hindustani and the South Indian school is called the Carnatic. इंडियन म्यूज़िक है भारतीय संगीत। तो हमारा जो भारतीय संगीत है ये वेदों से जुड़ा हुआ है, उसी प्रकार से जिस प्रकार हमारे भारत देश के नृत्य जुड़े हुए हैं। क्लासिकल म्यूज़िक होता है शास्त्रीय संगीत। अब इसके दो इम्पॉर्टेंट मेन स्कूल्स बताए गए हैं। पहला है द नॉर्थ इंडियन स्कूल जिसको हिंदुस्तानी म्यूज़िक कहा जाता है, और दूसरा है द साउथ इंडियन स्कूल जिसको कार्नेटिक म्यूज़िक भी कहा जाता है। भारतीय संगीत में घराना ट्रेडिशन है, मतलब घराना परंपरा है, जिसमें स्टूडेंट्स मतलब जो लर्नर्स हैं वो म्यूज़िक को, संगीत को सीखते हैं गुरु के घर में रहकर। Devotional music such as couplets by Kabir, bhajans by Surdas, Tulsidas and Mirabai are sung all over the country. Indian folk music consists of traditional songs sung during festivals and weddings. भक्ति संगीत जैसे कि कबीर के दोहे, सूरदास, तुलसीदास, मीराबाई के भजन पूरे भारत देश में गाए जाते हैं। भारतीय लोक संगीत है जिसमें पारंपरिक गाने आते हैं जो कि त्योहारों में और शादियों में गाए जाते हैं। नेक्स्ट, आर्ट एंड स्कल्पचर। The earliest form of art based on the teaching of the Buddha are the cave paintings at Ajanta and Ellora in Maharashtra. Miniature art is seen in Pahari, Rajput and Mughal paintings. Earlier, craftsmen built beautiful monuments and places of worship. The stupas of Sanchi were built by Emperor Ashoka and the Taj Mahal by Shah Jahan. The latter is now recognized as one of the wonders of the world. Many famous monuments and buildings are a part of our heritage. अब अजंता और अलोरा की जो गुफा चित्रकारी है वो बौद्ध धर्म की शिक्षाओं पर आधारित कला का सबसे प्रारंभिक रूप है जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। मैनिएचर आर्ट होती है लघु कला जो कि बहुत ही छोटे आकार की होती है, बहुत ही स्मॉल साइज़ की होती है, और ये पहाड़ी, राजपूत और मुग़ल पेंटिंग्स के अंदर दिखती है। इससे पहले कारीगरों ने ब्यूटीफुल मॉन्यूमेंट्स, सुंदर मॉन्यूमेंट्स और पूजा स्थल बनाए थे। सम्राट अशोका द्वारा सांची का स्तूप और ताजमहल शाहजहां द्वारा बनवाया गया था। ताजमहल को दुनिया के 7 अजूबों में से एक माना जाता है। कई प्रसिद्ध मॉन्यूमेंट्स मतलब स्मारक और इमारतें हमारी विरासत का हिस्सा है। The food grains, vegetables and fruits grown in our country vary from place to place depending upon the landform, climate and season. इसका मतलब है ग्रेन्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स मौसम के अनुसार और क्लाइमेट और सीज़न के अनुसार ही उगाए जाते हैं। स्पाइसेस जैसे कि चिलीज़ होती हैं, मिर्चें, टर्मरिक हल्दी, पेपर होता है, काली मिर्च, कार्डमम होता है, इलायची एंड क्लॉव्स होते हैं, लौंग, ये सब उगाए जाते हैं। स्वीट्स सच एज रसगुल्लास, श्रीखंड, पयासम एंड लड्डूस आर पॉपुलर इन इंडिया। नेक्स्ट पैराग्राफ, clothes. Land and climate also determine the dress worn by the people of an area.
Some parts are covered with thick forest and some areas are near the sea. In some parts, summer are very hot and winters are very cold, while in other parts the climate is almost the same throughout the year. ना स्टूडेंट्स, इसका मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे दिल्ली में बहुत सर्दी होती है तो वार्म क्लोथ्स पहने जाते हैं, जब बहुत गर्मी होती है तो कॉटन क्लोथ्स पहने जाते हैं। तो ये सब जो ड्रेस है वो डिपेंड करता है कि आप कहाँ रह रहे हो, वहाँ का क्लाइमेट कैसा है। कुछ पार्ट्स ऐसे भी हैं जहाँ पे पूरे ईयर एक जैसा ही मौसम रहता है। नेक्स्ट पैराग्राफ, द पॉपुलर ड्रेसेस इन आवर कंट्री आर सलवार कमीज विद अ दुपट्टा इन पंजाब, घाघरा कुर्ता with an ओढ़नी in हरियाणा, घाघरा काचली in Rajasthan, लहंगा चोली in Gujarat, and a mundu blouse in Kerala. Men generally wear trousers and shirts. Other dresses for men are pajama kurta, dhoti kurta, lungi kurta or lungi shirt. Men in Rajasthan wear chudidar kurta with an achkan or angarakha, and a chudidar with a jacket is worn in Gujarat. In Tamil Nadu, men's lungis are called vesti and in Kerala they are called mundu. Men in West Bengal and Assam mostly wear dhotis, kurtas. Even the style of tying the turban differs from state to state. In the hilly regions, due to the cold, the Kashmiris wear a long woolen kurta called a firan. Next, unity. The history of the freedom movement proves that although we had and still have diverse cultures and backgrounds, people from different regions came together to fight against the foreign rulers. The Indian flag, the national anthem, and the patriotic songs are all symbols of our unity. Now students, जब ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे भारत देश में आई थी तो हमारे भारत देश को स्वतंत्र कराने में देश के हर क्षेत्र से, हर हिस्से से लोगों ने भाग लिया था। सब एकजुट हो गए थे एक दूसरे के साथ। मतलब इस पैराग्राफ में यही बताया गया है, द हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट, मतलब जो स्वतंत्रता आंदोलन था उसका इतिहास यही बताता है कि चाहे हम डिफरेंट बैकग्राउंड्स, डिफरेंट कल्चर से बिलोंग करते हैं, बट हम सब लोग एक हैं। हमारा इंडियन फ्लैग, नेशनल एंथम, पैट्रियोटिक सॉन्ग्स, ये सब हमारी एकता के प्रतीक हैं। नेक्स्ट, ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन होता है वर्ल्ड वाइड इंटरेक्शन। Progress in communication, transport, and technology during the 20th century has enabled us to overcome geographical boundaries and has revolutionized our way of living. Now students, geographical boundaries होती हैं भौगोलिक सीमाएं। जैसे हमारा देश है तो इसकी एक बाउंड्री है, जैसे ये बाउंड्री ख़त्म हो रही है तो दूसरा देश शुरू हो जाएगा। इसी प्रकार से हमारे देश के अंदर बहुत सारी स्टेट्स हैं, तो जितने भी क्षेत्र हैं सबकी अपनी एक बाउंड्री है, सीमा है। 20th सेंचुरी में कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्ट, टेक्नोलॉजी में जो प्रोग्रेस है, मतलब जो प्रगति है, उसने हमें भौगोलिक सीमाओं को पार करने में सक्षम बनाया है और हमारे जीवन जीने के तरीके में क्रांतिकारी बदलाव लाया है। द वर्ल्ड इज लिंक्ड एज नेवर बिफोर. Economies, society and cultures have been connected through a global network, not only in India but throughout the world. अब इसमें ये बताया गया है कि जो दुनिया है वो पहले से कई अधिक एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है। इकोनॉमीज़, सोसाइटीज़, कल्चर एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है ग्लोबल नेटवर्क के थ्रू, सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में। नेक्स्ट पैराग्राफ, globalization has resulted in spreading information and ideas. Economically speaking, it has increased money flow, investment, and international trade. This has brought all the countries into a single giant world market. Now students, globalization होता है worldwide interaction, जिसमें exchange of information, ideas, goods and services होता है, और इंटरनेशनल ट्रेड मतलब अंतर्राष्ट्रीय जो व्यापार है, सब एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो रहे हैं, इन्वेस्टमेंट हो रही है, मनी फ्लो बढ़ रहा है और इंटरनेशनल ट्रेड भी बढ़ रहा है, मतलब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार भी बढ़ रहा है। दिस हैज़ ब्रॉट ऑल द कंट्रीज इनटू अ सिंगल जायंट वर्ल्ड मार्केट। इसका मतलब यही है कि ग्लोबलाइजेशन ने सभी देशों को एक साथ एक ही सबसे बड़ी मार्केट में ला दिया है। वी विल लर्न
with the help of two case studies how historical and geographical factors influence regional diversity. Kerala, a case study. Kerala is a narrow strip of land between the Arabian Sea and the Western Ghats in the southwest corner of India. It is full of coconut trees and has beautiful beaches. Kerala has the highest rate of literacy. Women in Kerala hold a high position in society. People of many religions live together in harmony. Hills and valleys. Kerala has high mountains which have deep valleys and are covered with forest. Cash crops like tea, coffee, and cardamom are grown on the mountain slopes on large farms called plantation. Inland plains. In this region, the hills are not very steep. The valleys are wide and are dotted with paddy fields. The higher lands and hill slopes have plantation of rubber, fruit trees, tapioca, and other cash crops like pepper. Coastal belt. This belt is comparatively plain. Large rice or paddy fields and groves of coconut trees are found. Backwaters. The Blackwaters are a peculiar feature of the state. They are a network of canals and lakes and are fed by as many as 38 rivers. The chief mode of transport is by boat. Rivers. There are 44 rivers in the state, which begin from the Western Ghats. They are now being harnessed for power generation and irrigation. The backwaters and the inland waterways have helped in the growth of the core industry, which is the oldest traditional cottage industry in the state. Core is made out of coconut husk and is transported through waterways. Fishing is a flourishing industry in several parts of the state. Kerala is famous for rosewood and sandalwood carvings, brass and bell metal lamps, and gold jewelry. Kathakali is a form of dance drama and Mohiniyattam is a classical dance form of Kerala. Kalaripayattu is a famous martial art form of the state. Onam is the main festival of the state. The snake boat races during the festival are a popular tourist attraction. Magnificently decorated snake boats take part in the boat race. The Sabarimala Ayappa temple and the Bhagwati temple at Attukal are famous pilgrim centers in Kerala. The variety of life in Kerala can be seen in the religious and secular festivals which form an integral part of its cultural heritage. Next, Ladakh, a case study. Ladakh is a union territory in North India. It consists of two districts, Leh and Kargil. It is surrounded by two mountain ranges, the Karakoram in the north and the Great Himalaya in the south, and by two parallel chains, the Ladakh Range and the Zaskar Range. Ladakh is a land of high passes, a resting point for travelers on the Asian trade routes of Central Asia and beyond. Stories based on the life of the Buddha are the main themes of the traditional theatre of Ladakh. It is an essential part of the Ladakhi heritage. Many villages have a gompa or monastery, a complex of temples and prayer halls. Gompa are an important part of the lives of the people. These gompas serve as places of worship, meditation, and as schools. Some of the most famous fairs and festivals are celebrated around these gompas. Losar is celebrated as their New Year. She Shrupla is celebrated to mark the bringing home of the harvest. Hemis Cheshu is the biggest summer festival held in Ladakh. This festival symbolizes the victory of right over wrong, good over evil. Many of the annual festivals of the Gompas takes place in winter. These take the form of dance and dramas. Lamas, dressed in colorful robes, wearing masks, perform here. Charm, the sacred mass dance is performed on these occasions by monks dressed in brocade robes and masks. Long horns are blown, accompanied by cymbals. People come from near and far to see these events. Archery is an ancient sport of Ladakh. In Leh and its surrounding villages, archery festivals are held during summer. Polo, a game played here, differ in many respects from the international game of polo. Traditionally, almost every major village had a polo ground.
Ladakh has very limited source of water. Items of daily use such as cooking pots and bowls as well as agricultural implements are supplied by local blacksmiths. Since products made from fresh milk are important and necessary, each family owns some goats, cows, and yak cow. Sheep are important in Ladakh because they produce pashmina wool. This wool is sold to traders from Kashmir. Ladakh is home to some rare animals. These include the mountain goat, the snow leopard, bronze strong wild yak, wild horse, nine, large horned sheep, musk deer, and the Tibetan antelope. Give short answers for the following questions. Question number 1. How is India a diverse country? Answer. India is a diverse country because different parts of India have different customs, languages, dress, food habits, and people also follow different religions. Question number 2. What is the art of folk theatre? Give two examples. Answer. Stories with moral lessons told through song, dance, and drama are called the art of folk theatre. For example, songs and dances of Bhangra from Punjab, Lavani from Maharashtra. Question number 3. What is religious music and folk music? Answer. Bhajans of Mirabai, Surdas, Tulsidas, and couplets by Kabir are religious music. Folk music is mainly traditional songs sung during festivals and weddings. Question number 4. Name three national festivals and three religious festivals. Answer. Three national festivals of India are Independence Day, Republic Day, and Gandhi Jayanti. Three religious festivals are Holi, Diwali, Eid. Next, give long answers for the following questions. Question number 1. What is culture? Answer. Culture is the man made environment of a society. Culture consists of ideas, beliefs, customs, art, religions, music, and dance. The food habits of the people, the festivals they celebrate, their art and handicraft are all part of a culture. Question number 2. Which are the two main schools of Indian classical music? What is the Gharana tradition? Answer. The two main schools of Indian classical music are the North Indian school known as Hindustani music and the South Indian school known as Carnatic music. In the Gharana tradition, students learn music from a guru by living in the guru's house. Question number 3. Write short notes on the backwaters and the Gompes. Answer. The backwaters of Kerala are a peculiar feature of the state. They are a network of canals and lakes and are fed by as many as 38 rivers. The chief mode of transport is by boat. Gompes are an important part of the lives of the people in Ladakh. Gompes are Buddhist monasteries that serve as places of worship, meditation, and as schools. Number 4. How has globalization affected our world today? Answer. Globalization has linked the world through a global network. Economically, it has increased money flow, investment, and international trade, not only in India but throughout the world. It has brought all the countries into a single giant world market. Question number 5. Why are the fishing and core industries flourishing in Kerala? Answer. Kerala is a coastal region and nearly the entire state is covered with the coconut palms. Coir is made from coconut husk. This is why the coir industry is a flourishing one. Kerala is not only a coastal region but it also has 44 rivers. Due to this, the fishing industry is also flourishing here. Students, we are done with all the questions and answers. Thank you.